Will Virat Kohli finally find form? Should Dinesh Karthik play ahead of Rishabh Pant, or should both be a part of the team? What's up with KL Rahul, and what to expect from VVS Lakshman, the interim coach, as Dravid recovers from COVID-19? Will absence of Shaheen Shah Afridi make the Indians happy, as Waqar Yunus suggested, or will Pakistan be kind of relaxed? Pakistan will be in better state of mind since Bumrah isn't there, as Irfan Pathan suggested. So much to talk, so much to look forward to. हम 30 minutes में जितना cover कर पाएंगे उतना करेंगे in this episode where we are looking forward to the Asia Cup, more specifically the India-Pakistan match on Sunday, and to do all the heavy lifting with regards to ekdam hi intellectual analysis. We have the two Pandeys in house, Devendra and Rahul. Welcome guys. शुरुआत आपसे करते हैं देवेन भाई. इंडिया पाकिस्तान हाइप में हम ड्रॉ हो जाए या थोड़ा सा हम एक स्टेप पीछे लेकर देखें कि ये मैच इन द लार्जर पिक्चर जहां T20 वर्ल्ड कप 1.5 महीना दूर है अब, शायद उससे भी कम, उससे थोड़ा ज्यादा. आई एम नॉट गुड विथ मैथ, बट वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देवेन भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट एंड ये मैच विच टेक्स प्लेस टुमारो? थैंक यू मिहिर. मुझे आज का एपिसोड कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की तरह याद आ रहा है क्योंकि पांडे विल बी कॉलिंग पांडे. शुरुआत ही आपने बहुत ही मतलब एकदम लो स्टैंडर्ड जोक से कर दिया देवेन भाई. प्लीज लेट्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ दिस डिबेट. ओके, आई टेक माय वर्ड बैक. क्या करोगे, अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ है तो इतना ही मिलेगा तुम लोगों का गाइस, इतना ही सुनना पड़ेगा. कमिंग बैक टू क्रिकेट, बहुत एक्साइटमेंट जरूर रहेगा. इंडिया पाकिस्तान गेम है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद खेल रहे हैं. द वुंड आर स्टिल फ्रेश. दुबई में भी हम लास्ट हारे थे उनसे वर्ल्ड कप में, और इस बार एक चांस मिलेगा हम इंडियंस को रिडीम करने के लिए. बट मेरे हिसाब से ये पूरा एशिया कप एक आदमी पे सेंट्रिक रहेगा, वो है विराट कोहली और उसका फॉर्म, और इंडियन टीम उसको कहाँ इस्तेमाल करेगा. विथ विराट कोहली विल बैट नंबर 3 और विल विराट कोहली विल ओपन, बिकॉज पूरा होल डिबेट बिफोर गोइंग एशिया कप इज अबाउट विराट कोहलीज फॉर्म. बाकी सब प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, सबने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, बट विराट का फॉर्म में आना इंडियन टीम के लिए आगे भविष्य बहुत कुछ तय करेगा. राहुल यार, ऑन दिस पॉइंट राइट, कोहली का काफी इंटरेस्टिंग एक कमेंट था इन हिज इंटरव्यू टू स्टार स्पोर्ट्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट, एंड एक तरह से आई मीन वी गॉट अ ग्लिम्स इनटू हिज माइंडसेट. ही लुक्स प्रीटी मच एट पीस विथ हिमसेल्फ. ही वाज सेइंग कि इन 2019 जब भी उसका स्लंप एक था तभी ही एक्चुअली थॉट समथिंग, सॉरी 2014 वाज इट, 2014 या, मतलब उसे एक्चुअली लग रहा था कि उसके क्रिकेट में कुछ गड़बड़ है, एंड ही इजंट फीलिंग दैट वे this time. It just shows कि थोड़ा सा he's at peace with himself. But how do you look at Kohli's slump in form? How seriously should we look into it? And is there a bigger concern there? It is me. It is, and it's been for some time. Although, speaking on a positive note, कल जब वो नेट्स में बैटिंग कर रहे थे, जो उनकी फुटेज आई है, he looked really good. He was taking on the spinners from ball one. But I'm sure pray के सब और सभी इंडियन फैंस यही प्रे कर रहे होंगे कि it does that in this tournament, because a lot is riding on him for the sake of his own place in that T20 World Cup when we talk about this tournament. I mean, I know Captain Rohit Sharma, everyone in the team management and the BCCI have defended him multiple times during this particular phase, but 1,000 days since that last 100. I mean, we talk about T20, hundreds don't matter that much. But I think what's more important is that उनका जो ये फेज रहा है, उसमें जो एक 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, तो जो शुरुआती दौर था, उसमें we actually saw some really good innings and crucial innings from him. Take the home series against England, for example, in 2021, when in that 5-match T20I series, he played a couple of great knocks, one while chasing, one while setting up the total. I think he got 350s in total in that 5-match series. The innings against Pakistan in that last T20 World Cup opener was another crucial one and showed his class against the run of play. जब शाहीन शाह अफरीदी ने पावर प्ले में वो 3 विकेट चटकाए थे, I think his innings was really crucial. But I guess from that IPL, this particular IPL season, it's just been a nightmare of sorts, given how he hasn't been able to not only get those 50s, but has gotten out playing the kind of shots which most of us thought he was very comfortable playing. Hasn't played a lot of T20 cricket since that T20 World Cup as well, only 4 innings. And on the other hand, what's happened is Surya Kumar Yadav and Deepak Hooda have been just phenomenal batting at 3 or 4 in that batting order.
Deepak Hooda has looked just the most destructive and attack-minded number 3 right now in world cricket. And वो जो noise रही है around Virat Kohli's place in the team, that only got louder when Kohli was brought back in during the T20 series against England in place of Hooda, who, by the way, only recently gave us a glimpse of how he can be as a number 3. But he has done nothing wrong to not be in the lineup, and that was the discussion, which is going to be the discussion now. कि जब इंडिया के पास में सूर्या and दीपक जैसे बैटर्स हैं top of the order, how does then Virat Kohli basically create this requirement of himself in the lineup? A superstar like him then creates space for himself in this lineup. देन भाई, आपने मेंशन किया कि कोहली की पोजीशन टीम में कहाँ होनी चाहिए, टॉप ऑफ द ऑर्डर, नंबर 3 या हु नोज 4 और 5 या नंबर 11. वो डिबेट तो हम बेसिकली नेवर एंडिंग एक तरह से रही है. पर जो हमने इंग्लैंड में पैटर्न देख लिया राइट विथ रिगार्ड्स टू कोहली, की मतलब एक आंख बंद करके कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था कि वो कैसे आउट होने वाला है. एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जाएगी, he'll go फिशिंग आउटसाइड द ऑफ एज करके, कॉट बिहाइंड द विकेट्स. वो एक कंडीशंस अलग थे, दुबई में कंडीशंस थोड़े अलग रहेंगे. वो कितना बड़ा फैक्टर होगा, एंड विद इन द टीम प्लेयर्स कैसे ये चीज को डील कर रहे हैं. बिकॉज एक तरह से सारा अगर जो फोकस कोहली और उसके फॉर्म और वेदर ही शुड बी इन द टीम, वेदर ही शुड बी आउट ऑफ द टीम, इतना सब होता है, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर प्लेयर्स को भी इफेक्ट करता होगा ये सब. प्लेयर्स को थोड़ा तो इफेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर अगर रन नहीं मारेगा तो उसका यूज थोड़ा तो मरम्मत तो शुरू हो ही जाएंगे. भले ऑन रिकॉर्ड आप ना बात करें, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी. इफ यू आर सिटिंग आउट, प्लेइंग 11 में आप है नहीं और आप अच्छा कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन इफ यू आर हुड्डा एट द मोमेंट, आपको पता है मैच विनर हो, आप मैच निकाल सकते हो, आपने किया भी है लास्ट 6 महीनों में, और यू couldn't able to find a place in the team because विराट इज there. और विराट का ऑफकोर्स शू बहुत बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट को अभी भगा दो, पर विराट जितना उसने किया इंडियन क्रिकेट के लिए, वो जो बैकलॉग और स्टेचर है उसका, वो इट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज. वो थोड़ा भी परफॉर्म नहीं करेगा, इट्स बाउंड टू हैपन कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है करके टाइम्स. बट ये जो एज राहुल ने बताया कि इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि द नंबर ऑफ डेज हैज बीन लॉन्ग. इतना कोहली ने कभी खींचा नहीं है अपनी लाइफ में. 1 सीरीज 2 सीरीज गया है, उसके बाद कभी कोहली हैज रिकवर, कोहली हैज फाउंड हिज फॉर्म. बट अभी पोस्ट कैप्टनसी जाने के बाद सिचुएशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड. वो विराट कोहली हमें दिख नहीं रहा है. टेक्निकल तो मैं बता नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट इट इज समथिंग टू डू मेंटल. लोगों ने बहुत कहा कि इसकी हेल्प लेना चाहिए, उसकी हेल्प लेना चाहिए, पर वेदर ही टुक दैट कि नहीं, हमें भी वो पता नहीं है. बट कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में ये बात उठेगी अगर इसका परफॉर्मेंस एशिया कप में नहीं जाता है, इसका पोजीशन बनता है कि नहीं बनता है. ये सब के प्रकरण में बीसीसीआई और सिलेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हाउ दे विल डील दिस. राइट, यू सेइंग कि कम्युनिकेशंस में काफी क्रिटिकल हो जाएगा अगर जो बीसीसीआई या सिलेक्टर्स बहुत बड़ा कॉल होगा, whatever they decide with Kohli, with regards to the World Cup. And I think उसमें बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है. आप कह रहे हो कि कोहली का ड्रॉप करना नहीं करना, वो बड़े प्लेयर है. श्रीराम वीरा, our ace writer, had written a piece couple of months ago where he had suggested that Kohli should just stop playing ODIs, T20s and focus on tests. It's a fascinating read. His arguments are really compelling. I think we should post a link in the description of this episode for anyone who wants to read. But Kohli, like we mentioned at the top of this episode, isn't the only big debate, only big talking point in the Indian team. दूसरा जो for me the more interesting debate is Dinesh Karthik versus Rishabh Pant thing. I mean, Karthik has for me been one of the finest, one of the most entertaining players in recent times that we've had in the team. I don't know, दोनों Pandeys, आपका क्या इस पे विचार है? My like I'm sure most of our regular listeners will know, my क्रिकेटिंग नॉलेज इज प्रीटी लिमिटेड, पर वो लिमिटेड नॉलेज में एटलीस्ट आई फील कि ऋषभ पंत जब टेस्ट मैच खेलते हैं तभी वो एकदम T20 जोन में रहते हैं, बट T20 जब खेलते हैं तभी वो पता नहीं यार कौन से जोन में रहते हैं. वो मतलब कुछ अजीब ही हो जाता है वहां पर. तो शुड कार्तिक बी पिक्ड अहेड ऑफ पंत? शुड बोथ बी इन द 11? वो भी एक काफी बड़ा कॉल होगा नहीं? मेरे हिसाब से आई विल गो विद डीके बिकॉज उसका परफॉर्मेंस T20 में काफी अच्छा रहा है. इफ यू लुक एट लास्ट 6 months since he has made a comeback, he has won more games for us. So I will definitely bet for DK. Experienced guy, he has done in the past, just for sheer that he can handle that pressure, especially in the last जो few overs होते death, इसमें he has done that. ऐसा नहीं पंत खराब नहीं है, पंत is also a very good player, but sheer the way he has done, I will reward DK the place in the Indian team. It's interesting, mate, because we started off this
whole discussion with Virat, and I think unki jo place hai in the 11 also decides a lot for the other players, which we all know. And I think the Pant Karthik discussion can only happen after we are kind of sorted out with our top three. So we did a video, I think a couple of months back, just after the India-England series got over. We were talking about how India's top order has had those strike rate problems. And there was an interesting tweak that was done, which wasn't done for the first time. We saw that earlier in the home season, February, mein jab India West Indies ko khel rahe the ghar mein, when Rishabh Pant was sent to open. But to see that happen during that T20 series against England, where I think both Pant and Rohit added around 50 runs in those first 4 to 5 overs, that was really something. And now coming back to the point that I think Pant adds a lot more variety to this middle order. That is not to say that TK's place in the lineup is questioned at all. I think he has earned that spot. But I think just for the sake of that left and right hand combination, we cannot ignore Pant, especially after the fact that India may go with 2 right-handers on top of the order. Jadeja and Pant will, I guess, be 2 crucial options to just change things a bit in terms of that batting order. वो monotonous एक streak नहीं रहेगी of right-handers coming in. And I think just Pant has, of course, not been the same batter that he has been in the test format, not as destructive comparatively in the T20Is. When we talk about the last T20 World Cup, जो India-Pakistan match हुआ था जिसमें Virat Kohli had scored that 50, Pant's role in that particular match was equally important. I mean, I remember those 2 consecutive one-handed sixes did change things up a bit. Pakistan looked really on top of India at that moment, and then Pant hit those 2 sixes. And that's the kind of player he is, right? He needs just 1 over to put the pressure back on the opposition, and that's just the kind of format we're talking about. So I guess both of them will have to be in the lineup, and it's a rich problem for India right now to choose between such good options in the middle order. They have Hardik Pandya, who's been phenomenal both with the bat, more so with the ball, and they have Jadeja, they have Karthik, and then they have Huda and Suryakumar Yadav to fill up that middle and lower middle order. So lots of options to choose between, but I think just in terms of Karthik and Pant, I guess they both should be in that lineup. Or Pant ki keeping, which is less talked about than his batting, has been such a big improvement in his game since that Australia tour, where he sort of emerged as this near mythical figure for India in that win. His keeping has improved really well, and I think he still is India's first choice keeper in the lineup. Just a small correction here from my end. When I mentioned here about Sriram Veera's piece, and I said कि Veera had argued कि ODIs and T20s दोनों से Kohli should take a sabbatical. In fact, he just mentioned T20 internationals. So we'll post a link to the story as well as a pod we had done on all that ails Kohli in the description. But yeah, this whole selection conundrum, yeah, I mean, it's such a massive task for VVS Lakshman, who is the interim coach while Dravid recovers from COVID. Then, bhai, what do you feel of Lakshman's style? अगर जो बड़े call लेने हैं, will he be able to take those big calls in crunch situations? Pakistan match will be Lakshman's first assignment as a coach, and कितने सारे tough choices है उसके पास. Okay, मीर लक्ष्मण का फर्स्ट ऐसा कोच नहीं है, वो जिम्बाब्वे भी रह के आए हैं, जस्ट ए इंटरिम कोच. नहीं, I mean senior team के साथ, like main team के साथ अगर जो हम देखें तो like Zimbabwe was still second string अगर जो एक तरह से देखें तो. इंग्लैंड में 2 मैच किया उसने, क्योंकि राहुल द्रविड़ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वी वर प्लेइंग टेस्ट एंड ठीक उसके बाद T20 स्टार्ट होने वाला था. और दूसरा ये कि मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ विल बी इन टच विद द टीम, व्हिच आई एम बीन टोल्ड, बिकॉज आज तो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, सो ही विल बी पार्ट ऑफ द प्लानिंग, प्रॉब्ली द इवन प्लेइंग 11 सिलेक्शन. तो ही, रोहित एंड राहुल द्रविड़ will discuss among each other and then they will decide the playing 11. So Rahul Dravid है नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सिम्टम वैसे भी माइल्ड है राहुल भाई का, और he will be part of the selection. तो इतना लक्ष्मण के लिए इतना बर्डिंग नहीं रहेगा जितना वी आर सोचेंगे बहुत बड़ा रहेगा. मोर सब सेट ही प्लेयर्स हैं, बट उनको अभी परफेक्ट प्लेइंग 11 ढूंढना है जो शायद आगे इनको नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक जाए. ये सिर्फ एशिया कप तक नहीं रहेगा. आई थिंक दे विल बी नाउ प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप व्हिच इज नेक्स्ट 2 months आफ्टर दिस. सो द रोड मैप हैज जस्ट स्टार्टेड. यहाँ से लोग अभी, मुझे लगता है कि इंडियन टीम ज्यादा एक्सपेरिमेंट अब करेगा, या करेगा तो जो छोटा मोटा सीरीज आएगा उसमें करेगा, बट इट्स ऑलरेडी डन नाउ. अभी आपको जो सेम बेंच स्ट्रेंथ दिखेगा पूरे मैचेस में, पूरे सीरीज में या टूर्नामेंट में.
Right. हमने बैटिंग की बात कर ली. I don't know if any of you guys are really interested to dissect everything that's happening with KL Rahul. If any takers for KL Rahul and the argument around him, I think कि मतलब थोड़ा बंदे में patience दिखाना चाहिए. But I mean, you guys are experts. आपको क्या लगता है with regards to him? Same debate, yeah, Mihir. It was there even before the last T20 World Cup. It's been there with Rahul since the last 3 IPL seasons, since he made that switch from RCB to Punjab and was given the captaincy. That strike rate problem has been pertinent. I don't know how much, and I wouldn't really want to make an assumption here that captaincy, his IPL captaincy has made him a little bit more cautious in terms of his batting up the order. I wouldn't want to make that assumption, but it is a big problem, right? When you have deep batting orders in contemporary cricket, जहां पर आपकी बैटिंग 8-9 तक जाती है, अगर दीपक चार और शार्दुल ठाकुर खेल रहे होते हैं तब और डीप हो जाती है आपकी बैटिंग, तब आप चाहोगे कि आपका टॉप ऑर्डर, the task that they should have is basically to give you a good power play, especially the openers. And with Rahul, even though there were a couple of good glimpses in that T20 World Cup only, the match against Afghanistan and another match that followed after that New Zealand defeat, but the problem's been there in terms of the strike rate, and it's a big one. But he is not a batter who hasn't shown his class in terms of strike rate. And in fact, he made a name on the scene as a T20 opener with his hitting ability up the order. He can do it, and India would certainly want him to be that Rahul going into the T20 World Cup, जो power play में आपको 60-70 रन accumulate करके दें अपने पार्टनर के साथ में. That would really be required from him and Rohit up the order. देन भाई यार, हम हमेशा बैटिंग पे फोकस कर लेते हैं. आज भी हमने 15 मिनट बैटिंग की बात कर ली, बट दूसरे एंड पर भी काफी कुछ हो रहा है नहीं, विद रिगार्ड्स टू द पेसर्स एंड दैट डिपार्टमेंट. स्पेशली अब जब बुमराह नहीं है, तो हाउ डज द बॉलिंग लाइनअप लुक टू यू? बिकॉज कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम पिचेस इन यूएई काफी पेसर फ्रेंडली, स्पिन फ्रेंडली? क्योंकि हम देख रहे थे ट्रेनिंग वीडियोस में जहां पर स्पिनर्स काफी दे वर हैविंग अ गो एट द नेट्स. व्हाट्स ऑन दैट? सो अगर मेरे अगर हम इसको देखेंगे तो आई विल रिलेट इट टू द आईपीएल. जैसा लास्ट आईपीएल भी वी हैव प्लेड, बीच में जो इससे पहले वाला जो आईपीएल एक दुबई में हुआ था, और जो सेकंड वेव के बाद वाला, वो पेसर्स को इनिशियली बहुत हेल्प किया था. इधर वेदर भी आपको 40 डिग्री वाला रहेगा क्योंकि बहुत गर्मी होगी, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा. पर आई थिंक इनिशियली पेसर्स विल कम इन प्ले. जैसे जैसे सीरीज जाएगा वैसे वैसे विकेट कैसा बिहेव करेगा यहाँ से रह के बताना बहुत मुश्किल है. बट अगर लास्ट आईपीएल का ट्रेंड देखें तो स्टार्टिंग में पेसर्स चले और बाद में स्पिनर्स टुक ओवर. तो आई एम अज्यूमिंग कि वैसे ही होगा इस बार. एंड हमने बैटिंग ऑर्डर की बात की, हमने डिस्कस किया कौन कहाँ हो सकता है, होना चाहिए. बॉलिंग में अगर जो हम 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, तो व्हाट वुड बी योर पिक्स लाइक? बॉलिंग में भुवी को दिखाना पड़ेगा कि वो बॉलिंग के पैक को लीडर रहेगा, क्योंकि ही इज ओनली एक्सपीरियंस गाय इन दिस टीम, स्पेशली वो फास्ट बॉलिंग में. स्पिनर्स इतना इश्यू हमें नहीं है, बिकॉज चाहल है, अश्विन है, जडेजा है, बिश्नोई भी है. बिश्नोई इज वेरी गुड बॉलर मुझे लगता है. पर भुवी, अर्शदीप, आवेश खान, ये हमारे पास स्पेस हटा के चौथा हार्दिक पांड्या है. तो ये जो 3 पे दारोदार होगा. अर्शदीप और आवेश इतने एक्सपीरियंस है नहीं. मुझे लगता है अर्शदीप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा. उन्होंने जो वेस्ट इंडीज में दिखाया, लोगों को काफी अच्छा होप दिख गया कि अच्छे डेथ बॉलर हैं. पर ये थोड़ा एशिया का थोड़ा अलग गेम होगा. इंडिया पाकिस्तान भी शायद उसको खेलने मिलेगा, वो भी एक अलग हाई प्रेशर गेम होगा. हाउ ही विल डील ऑल दिस सिचुएशन, वो देखने लायक रहेगा हमारे लिए. और बुमराह का एक्चुअली ना होना बहुत फर्क है, क्योंकि रोहित बुमराह को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है. स्टार्टिंग 1-2 ओवर डालाएगा, बाद में बीच में एक और लास्ट में एक. वी न्यू कि हमारा 4 ओवर सेफ है. 4 ओवर में बहुत ही खराब दिन रहेगा तभी हैवी रन जाएंगे. या ऐसा यूजुअली होता नहीं है बुमराह की कैरियर में. तो वो 4 ओवर इंडिया कैसे कंपनसेट करेगा या कैसे उसको फिलअप करेगा, दैट विल बी रियली बिग चैलेंज फॉर द टीम. एग्जैक्टली. और हम ये सारी चीजों में वी ऑल्सो लेट इट स्लिप कि रोहित का फॉर्म इटसेल्फ वाज स्लाइटली इफी, नॉट द ओल्ड रोहित दैट वी नो, बट हम लेट्स सी. आई मीन काफी टाइम है टू एनालाइज दैट, सी हाउ रोहित परफॉर्म्स. इंडिया ऑफ कोर्स आर इन द पूल विथ पाकिस्तान, जिनसे हम खेलेंगे ऑन संडे, फॉलोड बाय द सेकंड गेम ऑफ द ग्रुप अगेंस्ट हांगकांग. हांगकांग मैच यार राहुल बड़ी टफ होनी चाहिए. पाकिस्तान तो वही चल जाएगी थोड़ी. I think if we go back to 2018, Hong Kong did give India some scare in that first match. 2018 when Hong Kong qualified for the Asia Cup, it was a 50-over tournament. And it wasn't the easiest of wins for India, not at all. So, and they've won all 3 of their qualifying matches. They pipped UAE
who have multiple World Cup experience under their belt in 20 over and 50 over format. So it's good that way. Cricket can also boast a little bit. Asia can also boast a little bit more variety in terms of their continental cricket tournament. So I think it should be good fun. And gents, a word on Pakistan. हम of course काफी नए चेहरे हैं, बट जो एक सबसे अगर जो हम वकार यूनिस की बात करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डरावना चेहरा है शाहीन शाह अफरीदी का, वो नहीं है. हाउ मच ऑफ इम्पैक्ट विल दैट बी, एंड या व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान? राहुल फर्स्ट एंड देन you, Devendra. Interesting, because last time T20 World Cup India has almost had this reputation of Pakistan with regards to their fast bowling. That's going to be the key contest. But India weren't able to take a single wicket for Pakistan in that T20 World Cup match. They won by 10 wickets, despite the total not being that big. It was a good performance up the order from Babar. It was a comprehensive performance from Babar and Rizwan up the order. And Pakistan had multiple match winners in that World Cup. So they've almost emerged as this team in tournament cricket that is not just one to look out for, which they were ahead of the T20 World Cup. Many pundits had said that. But अब इस Asia Cup और इस T20 World Cup में जाते हुए, they are almost like a team you consider as favorites for that title. And they had that brilliant run as well just before they lost that semi-final to Australia. So I guess unki batting is also one of the points that needs to be talked about. I think in the absence of Shaheen, their batting has the biggest strength tag going into this tournament with not just Babar, but also Rizwan, Asif Ali, who won that match against New Zealand almost single-handedly towards the end in the World Cup. And they have a good set of all-rounders. Multiple options are unke paas mein in terms of batting and bowling, which you need in this format. It's really going to be tough to not watch them in the final in this Asia Cup. And I think Mohammad Hasnain is one big name in terms of that bowling जो हम बात कर रहे हैं. देवेन भाई से यही पूछना चाहूंगा in terms of his experience covering cricket. How is it that Pakistan so consistently bring in these fast bowlers ahead of every single cricket tournament that are seen as genuine fast bowlers, ones who can clock 150 and ones who can give you problems in terms of that line and length? अलग-अलग तरह के variations होते हैं जिनके पास में. या एक्चुअली मैं ये पाकिस्तान एशिया कप अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ उनके फास्ट बॉलर के लिए भेजूंगा, इंक्लूडिंग नसीम शाह हो गया, हसनैन हो गया. यार वो अलग ही जगह ही है, वो नेचुरली लोग निकलते हैं वहां से. स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर्स उनके पास आते हैं, जो भी आता है पेसर 140 प्लस ही आता है. अगर आप 90 से किड से पूछे तो जैसे हम लोग जब मैच देखना शुरू किए तो वकार, वसीम, अकीब जावेद, उसके बाद शोहेब, मतलब आते कहाँ से थे यार. हम हमारे अपने पेस बॉलर देखते थे, वेंकटेश प्रसाद राइट आर्म फास्ट मीडियम, कितना 112 113. यार उनको कहाँ से आ रहे हैं यार, ये तो चीटिंग है करके, उनको तो अपने लोग ही थे, इनके पास से माल कहाँ से आ रहा है करके. तो ये हमेशा सोचता था मैं, हमेशा पाकिस्तान टीम को एज अ फास्ट बॉलर के लिए दिखता हूँ. उनके पास जैसा ब्रीड है, उनके पास जैसा लाइनअप आता है, वो शायद वहाँ की एनवायरनमेंट वैसा है कि वहाँ का जो जितने लोग हैं सिर्फ तेज ही फेंकना चाहते हैं कि बस सभी फोड़ो और कुछ है नहीं करके. तो मैं ये एशिया कप सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए दिखूंगा, वो भी पाकिस्तान के. चलो एक और रीजन है अगर जो आपको एशिया कप देखना है, अपार्ट फ्रॉम कोहली, पंत, कार्तिक, हमने जो भी स्टार्टिंग में बात की, अगर जो आप बियॉन्ड राइवलरीज, बियॉन्ड ऑल द हाइप एंड मसाला देखें, तो इट विल बी अ क्रैकिंग मैच. We will of course try to come up with a flash express delivery episodes during the Asia Cup, so watch out for that. And I guess that's it, that's all we have for today's episode. Thank you for listening. Game time with me, Mihir Vasavda, Rahul Pandey and Devendra Pandey. We'll be back with a fresh episode next Saturday. You were listening to Express Sports by the Indian Express. This week's show was edited and mixed by Abhishek Kumar and produced by me, Shashank Bhargav. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Audio and write to us at podcasts@indianexpress.com.